Hi dear students, let's see this question that came from the topic of electrostatics. The question is fairly simple. Most of the students would have done this. Although this was one of the better questions in paper 1. Paper 1 के ये better questions में गिना जाएगा. But overall the question is simple. This was based on STEM based question. That means कि again paragraph based questions. There were two questions इस para पे जो based थे. And electrostatics topic का question है and we have to find the value of R and B. We will see what is R, what is B in this question. तो यहाँ पे दो चार्ज रखे गए हैं, वन माइनस क्यू रखा गया है ओरिजिन पे एंड क्यू बाई रूट थ्री इज केप्ट एट द लोकेशन ऑफ 2,0. ठीक है, सो आई हैव ड्रॉन अ बेटर फिगर ओवर हियर. सो इट्स लोकेशन इज 2,0. ओके, सो दिस लोकेशन इज 2,0. सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट द कोऑर्डिनेट b,0. ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर एक b,0 पे. ये एक इक्विपोटेंशियल सर्कल है रेडियस r का. ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सर्कल है रेडियस r का. तो बेसिकली वी हैव टू चार्जेस इन द xy प्लेन, माइनस q at the origin and q by root 3 at 2,0. So under the presence of these two charges, there is an equipotential circle which is of radius r and which is centered at b,0. So we have to find the value of r and we have to find the value of b. This is the question. Okay. So basically what I'm going to do, I'm going to tell you two solutions of this. Solution one, number one will be regular procedural method, which is slightly calculative, but all of you will understand, not most of you, all of you will understand. It's a regular method. Solution two, however, I will be utilizing a standard result of a concept called uniqueness theorem, which is not in IIT JEE syllabus, but is a standard result which we derive in uniqueness theorem. Now this theorem, uniqueness theorem, is not in IIT JEE result, so I'm not sure how many of you would be knowing that because it's not in JEE syllabus. But those of you who in case have studied uniqueness theorem in depth, so they will realize that I'm going to use one particular result from that and it will solve the question in one shot. So will be telling you both the solutions, right? So let's do this by first method. So on this circle, it's an equipotential circle and the potential is zero on this circle. It's also given in the question that this is equipotential and the potential is zero everywhere on this circle. So let's choose two convenient points, A and B, because these are two very convenient points for us. So what we will do, we will write potential at A and we will make it 0. Similarly, we will write potential at B and we will make it 0. So if you write potential at A, potential at A due to negative charge will be K into minus Q upon this distance. Okay. Now this distance can be written as total B minus R. Okay, total distance is B and this distance is R. So this will become B minus R. Okay, plus potential due to Q by root 3. So this will be K into Q by root 3 divided by this distance. Okay, what is this distance? See, first let's find this distance. So this distance is B minus 2. From origin to center is B and from origin to this point is 2. So this distance will be B minus 2. Now this AC is R. So if you deduct B minus 2 from R, then you will get this distance, which is the distance of the point A from the charge. So we will write R minus this distance, which was B minus 2. Alright. So this is the potential at A, which is 0. So you can see that K and Q will be cancelled. This term will go on the left side, it will become positive, and then we will take reciprocal. So it will become B minus R on the left side. Here you will get R minus B plus 2, and root 3 will also root 3 is also in denominator, which after taking reciprocal will come in numerator. If you expand this, it becomes B minus R is equals to R root 3 minus B root 3 plus 2 root 3. Okay, this is equation 1. Right. Similarly, we can write the potential at B. So potential at B due to negative charge is K of minus Q divided by B plus R. B plus R. Okay.
and similarly due to q by root 3 is this distance we have to write from charge up till b. So this is r plus this distance, which we already found b minus 2. Okay, this will also be 0. So kq will be gone. Again, this term you will take on the right side, and then we will take the reciprocal. So it will become b by r on the right side, and this will become root 3 into r plus b minus 2. If you open this, then this will become b plus r is equals to root 3r plus root 3b minus 2 root 3. Okay, so this is equation 2. Now if you add equation 1 and equation 2, so minus r plus r will get cancelled, so it will be 2b. Root 3r and root 3r will become 2 root 3r minus b root 3, and this will get cancelled, everything else will be cancelled. So b becomes root 3r. Okay, now put the value of b here, so it will become root 3r plus r is equals to root 3r plus root 3 into root 3b, root 3r, sorry. So this will become 3r minus 2 root 3. This and this gets cancelled. So from here you can see that 2r becomes 2 root 3. So r becomes root 3. Okay, r becomes root 3. So if r is root 3, so b will be 3. B will be 3. Okay, so this will become 1.73 and this will be 3.00. These will be the answer. Value of r is 1.73 and value of b is 3.0. So this will be the answer. Okay, now as I told you, let us see the second method to solve this question. Okay, so the second method is based on the standard result of uniqueness theorem. Those who have studied uniqueness theorem in detail and those who are aware of the standard results, then this method is for them. This is a very short method. तो इसमें तो those guys will be knowing कि जैसे अगर एक चार्ज यहाँ पे Q रख दिया जाए, ठीक है, और एक इक्विपोटेंशियल स्फीयर बनाया जाए सच दैट इसकी पोटेंशियल जीरो हो, ठीक है, इसकी पोटेंशियल जीरो, ये एक्चुअली एक स्फीयर बनता है, इक्विपोटेंशियल स्फीयर बनाया जाए, कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल हो जाएगा बट 3D में एक स्फीयर बनता है, ठीक है, सच दैट इस स्फीयर की जो सेंटर है यहाँ से डिस्टेंस डी पे हो, मतलब इस चार्ज आउटर चार्ज पे डी पे हो, और सच दैट इसका पोटेंशियल जीरो है थ्रू आउट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक चार्ज को रखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अंदर को एक चार्ज रखना पड़ेगा, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, लेट्स से इसकी वैल्यू क्यू डैश है, ठीक है, और ये हमें सेंटर से कितनी दूर पे रखना पड़ेगा, लेट्स से ये डिस्टेंस ए है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है उस थ्योरम में, मतलब उस थ्योरम में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आती है कि क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एंड इस ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब सेंटर से हमें कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो उसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, क्यू डैश की वैल्यू आती है आर इंटू क्यू बाई डी। आर क्या है, इस स्फीयर का रेडियस, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस होता है, ठीक है, एंड ये जो ए आता है, ठीक है, ए वो आता है आर स्क्वायर बाई डी, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये एक मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट ऑफ कोर्स वो थ्योरम खुद ही आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, बट ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। अब अगर तुम ये, और ये क्यू डैश नेगेटिव होता है ऑफ कोर्स, नेगेटिव इसलिए बिकॉज हमें पोटेंशियल जीरो चाहिए यहाँ पे, तो ये क्यू मतलब जो भी इसकी पोलैरिटी है उसका अपोजिट क्यू डैश पोलैरिटी का होता है, ठीक है। अब गिवन क्वेश्चन को तुम इससे कंपेयर करो, ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में इफ यू सी ये माइनस क्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसका सेंटर b कॉमा जीरो पे दिया हुआ है, राइट, और ये ओरिजिन है 0,0, और एक चार्ज रखा गया है q बाई रूट 3 का, कहाँ पे, 2,0 पे, ठीक है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस a हो गई, ठीक है, और ये q डैश कितना हो गया, q बाई रूट 3 हो गया। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं q बाई रूट 3 की वैल्यू रखूं, ठीक है, माइनस r अपॉन d क्या है, इस चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस, जो कि हमारे क्वेश्चन में b है, ठीक है, और ये q क्या होता है, एक्सटर्नल चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये माइनस q रख दिया, ठीक है, डिवाइड बाई d की वैल्यू कितनी है, b, इस चार्ज से सेंटर की डिस्टेंस b, ठीक है।
तो यू कैन सी यहाँ से b बाई रूट थ्री की वैल्यू कितनी आई, r आई, ठीक है, ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, सो b विल बिकम रूट थ्री r, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट, ठीक है। सेकेंडली a की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर बाई डी, a क्या है, चार्ज एंड सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जो कि b माइनस टू है, b माइनस टू, ठीक है, तो b माइनस टू इज आर स्क्वायर बाई डी, आर स्क्वायर बाई डी, डी कितना है, अगेन खुद b है यहाँ पे, डी क्या होता है, सेंटर टू चार्ज डिस्टेंस, तो जो कि यहाँ पे क्या है, b है, ठीक है। अब b की वैल्यू रूट थ्री आर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो रूट थ्री आर माइनस टू इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन रूट थ्री आर, तो ये कैंसिल, विच मीन्स, ये कैंसिल, विच मीन्स थ्री आर माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल्स टू आर, विच मीन्स आर इज इक्वल्स टू रूट थ्री, आर अगर रूट थ्री आ गया तो बी की वैल्यू थ्री आ गई, यू कैन सी द कैलकुलेशन हैज बिकम नेग्लिजिबल। ऑफ कोर्स ये रिजल्ट आया कहाँ से, ये रिजल्ट मैं भी डराइव नहीं कर सकता, रीजन क्योंकि उसके लिए फिर यूनिकनेस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, वो अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरम है, तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वैसे ये रिजल्ट अगर तुम्हें डराइव करना है तो तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम ये मान लो कि एक ऐसा स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है और इसी मेथड से जो हमने जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है उस मेथड से ये रिजल्ट डराइव हो जाएगी, ठीक है। बट उसके लिए यू विल हैव टू अज्यूम कि एक ऐसी इक्विपोटेंशियल स्फीयर एग्जिस्ट कर रही है, रियलिटी में थ्री डी में एक ऐसी स्फीयर होती है, ठीक है, मतलब जैसे क्वेश्चन में टू डी में सर्कल दिया गया है, तो थ्री डी में एक ऐसी स्फीयर होती है, स्फीयर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि ऐसा इक्विपोटेंशियल स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है जिस सच दैट क्यू और माइनस क्यू डैश की वजह से उस पर पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर ये रिजल्ट डराइव हो जाएगा विदाउट यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। बट आई गेस जिसने यूनिकनेस थ्योरम ढंग से पढ़ा है उसको ये पता होगा और उसके लिए ये सोल्यूशन है, बाकी जिसने यूनिकनेस थ्योरम नहीं पढ़ी है उसके लिए ये वाला सोल्यूशन नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दैट्स इट, थैंक